बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज हमारा लेसन नंबर है 29, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपने ऑलरेडी लेसन में मेरे साथ सॉल्व किए हैं, लेकिन कभी हमने उनको चेक नहीं किया। तो आज अगर आपने वो एक्टिविटी सॉल्व की हुई है तो मेरे साथ उसको काउंटर चेक कर लें, और अगर नहीं की हुई तो आप मेरे साथ उसको फिलअप कर लेंगे। हम इस एक्सरसाइज में दी हुई तमाम क्वेश्चंस की जो एक्टिविटी है उसको रिकॉल करेंगे, और अगर कहीं पे भी आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो टीचर आपको आइडेंटिफाई करके उसमें सपोर्ट दे देंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेसन। दिस इज द review lesson or exercise 1.2. Now the page number 1.2 for the exercise shows a picture जिसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं और इन ऑब्जेक्ट्स को हमने काउंट करना है। Always read the instruction carefully because this instruction tells you कि आपने क्या करना है। Count the number of objects and circle the correct option. So first you're going to count and then you're going to circle. तो आपने क्या करना है, काउंट करना है, एक टास्क ये, एंड द सेकंड वन इज यू आर गोइंग टू सर्कल। हमेशा इंस्ट्रक्शंस में जो आपने करना है उसको आइडेंटिफाई पहले किया करें ताकि आपके लिए इजी हो सके और मिस्टेक्स का चांस कम हो। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 सेज काउंट, सो लेट्स काउंट फर्स्ट. आई एम डूइंग पार्ट ए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, and the second says the circle. So I'm going to circle the number 12. Part B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 and then 37. So circle the number 37. Part C, there are butterflies. Let's see how many butterflies. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So if I go by a bundle of 10, I have 1 2 3 4 bundles of 10 and then 2 singles. So the number is 42. आपने देखा मैंने क्या किया, पहले मैंने एक एक करके जब काउंट किया तो उससे मुझे काउंटिंग में टाइम लगा, बट व्हेन आई मेड बंडल्स ऑफ 10 जो हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, इट वाज शॉर्टर एंड क्विक. सो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑप्शन यू थिंक यू कैन लर्न बेटर फ्रॉम. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. व्हिच नंबर कम्स बिफोर? नाउ पार्ट ए. व्हाट कम्स बिफोर 35? It's the number 34. Part B. What is the number before 73? It is the number 72. Part C. The number before 64 is 63. Part D. The number before 80 is 79. I hope you're coping up, and once you're complete, we'll move to the next question. Question number 3 says, which number comes after? Part A. What number is after 36? It's the number 37. Shabash, very good. I know you know the answers. Part B. What number comes after 35? It is 36. Good. Part C. What comes after 69? Is the number 70. Part D. What comes after 62? It is 63. Dear teachers, I hope you're following the solutions and you're helping children to sort it out. Question number 4. Which number comes between? Part A. What is between 38 and 40? It's the number 39. What is between 34 and 36? It's the number 35. The number between 75 and 77 is 76. And the number between 81 and 83 is 82. Good job. Now let's move on to question number 5.
Write the following in the form of tens and ones. So if we have two bundles of tens, we write 2 in the tens, and then we have 1, 2, 3, 4, 5 singles. So these are 25. Part B, let's look at the tens. 1, 2, 3. So there are 3 tens and 1, 2, 3, 4, 5, 6 ones. So the number is 36. Number 6, count ones in tens, then write its value. So if we have 5 tens and 8 ones, the number is 58. So if we have 6 tens and 8 ones, the number is 68. Question number 7, write the place value of the following numbers. So what comes in the ones? 5 comes in the ones and 6 comes in the tens. 9 comes in the ones and 7 comes in the tens. Write the following numbers in words. Now this space is very little. You have to fill it up. तो मैं आपके लिए slide पे यहाँ पे write कर देती हूँ. This is the number 84. 84 क्योंकि आपने words में लिखना है. So you are going to write it here. This is 35. 73. 96. 69. 54. 87. 46. So once you've done this, we'll move on to the question number 9, which says, write the given numbers in ascending order. And remember, in ascending order, the smaller number comes first and then the bigger number comes in the end. तो ये rules हमने छोटे छोटे याद रखने हैं ताकि जब हम question attempt करें तो हम गलती ना करें. So now let's look at part A and have a very close look at all the given numbers. The rule says the smallest number comes first. So the smallest number is 0, then is 2, then is 4, then is 6, then is 8, in the end it's 10. Now part B, observe please. Observation भी आपकी strong होनी चाहिए. This one is the smallest, I guess. So 10, then comes 20, then comes 30, 40, 50, and then in the last 80. Good job. Let's move on to part C. The smallest one here is 0. Then we have 4. Then after 4 we have 50, then 60, 70, 80, and then we have 90. Part D. 6, 21, 25, 38, 75, and 82. You always need to look at the tens first so that you can decide quickly which number comes first or which number comes after. Then we have question number 10. Question number 10 says, write the given numbers in descending order. That means the bigger number comes first and then the smaller number or the lesser number is in the end. So keep that rule in mind. Let's start with part A. The biggest number in the given sequence is 9. Then we have 7,
5, 3, 1. We are going from the biggest to the smallest. Part B 35, 38, 31, 46, 30. तो इसमें से देखिए कौन सा नंबर सबसे बड़ा है. I think it is 46. Then 38. उसके बाद वापस आए 35, then 30, and then 31, and then 30. Part C. Descending order, the biggest number comes first. 92, then 72, then 41, 31, and then 13. Part D. Biggest number, identify. 73, shabash. 73, 63, 43, 33, and then 13. Question number 11. Encircle the fourth mouse. So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 in cardinal numbers. तो ordinal number में fourth कौन सा है? First, second, third, fourth. And then you circle it. Part B says, encircle the seventh cat. So first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh cat. Now well done. आप सब ने मेरे साथ इस एक्सरसाइज को रिवाइज किया और इन एक्सरसाइज में दिए गए तमाम क्वेश्चन उन्हीं एसएलओज पे थे जिनको अभी हमने अब तक सीखा है. टीचर्स इस एक्सरसाइज के बाद जब हम सेक्शन 1.3 स्टार्ट करेंगे तो उसमें एसएलओज मज़ीद एडवांस होंगे, तो उनकी इस जो है कॉन्सेप्ट पे इनकी क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है. सो आप इनके लिए चाहें तो कोई मज़ीद वर्कशीट्स भी अवेलेबल इनके लिए कर सकते हैं या क्लास टास्क ऐसे बना सकते हैं जिनमें ये तमाम एसएलओज एक दफ़ा फिर रिपीट हो जाए. सो दीज वर सजेस्टेड क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक जिनको आज हमने रिवाइज किया है. टीचर्स यू कैन मेक मोर मटेरियल ऑफ योर ओन to make sure revise every SLO before section 1.3 starts. So take care and Allah Hafiz.